Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are starting the MCQs of Physics Inter, chapter number 15. This one is a section A exercise on page number 13 of textbook. So the first MCQs that's given is the relation between the temperature and average kinetic energy of the particles in a gas is, these four options are given. First option is the temperature is inversely proportional to the average kinetic energy. Second one is temperature is directly proportional to the average kinetic energy. Temperature is independent of the average kinetic energy. And the fourth one is temperature is proportional to the square of the average kinetic energy. So dear students, इस MCQs में चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये कह रहा है कि क्या टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इंडिपेंडेंट है या इनका स्क्वायर रिलेशन है. तो यहाँ पे आपने थ्योरी में पढ़ा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, और उसका फार्मूला होता है दैट्स इक्वल टू 3/2 kT. ये 3/2 जो है कांस्टेंट नंबर है, k है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और ये 3/2 और k ये पूरा टर्म जो आपका हो गया ये कांस्टेंट है. सो आप पहले ही पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जब आप कांस्टेंट को रिमूव करते हैं किसी इक्वेशन में से तो ये प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्ट इज इक्वल टू की जो साइन है ये प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाती है. That means average translation kinetic energy is directly proportional to the temperature. So that means अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है temperature is directly proportional to the average kinetic energy. So this one is a correct answer. That one is the first MCQs on page number 13. On your screen, physics chapter number 15 MCQs on page number 13. Standard conditions of the temperature and pressure refers to a gas at, यानी STP पे टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है. तो याद रखिएगा यहाँ फोर ऑप्शंस मिले हुए हैं आपको. ए में है 0 डिग्री सेल्सियस या 1 एटमॉस्फेयर, बी में मिला हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, सी में मिला हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ सब इनके साथ 1 एटमॉस्फेयर मिला हुआ है. सो याद रखिएगा जब हम एसटीपी की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर सेल्सियस मिलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा. ये देखें ये 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे वो 273.15 केल्विन होता है, और जनरली हम जो है वो 273 केल्विन यूज करते हैं. इसी तरह से प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर जो है स्टैंडर्ड प्रेशर है, या 101,325 पास्कल ये रीडिंग है, और इसको राउंड ऑफ करके 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी न्यूमेरिकली यूज किया जाता है. या जो है इन टर्म्स ऑफ द मर्करी ले हैं तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी काल से, और इसको 1 बार भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन के अंदर. तो आपके पास अब ऑप्शन जो आपका आया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिवन है और प्लस जो है 1 एटमॉस्फेयर. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. So that one is a question number 2. Now MCQs number 3. If the temperature is kept constant and the volume of the gas is double, then the pressure of a gas is, so it's very clear from this statement that Boyle's law is applicable on this statement because the temperature is kept constant and the change takes place in a pressure and the volume. So four options are given. Reduce to the 1/2 of the original value, being doubled, reduced to the 1/4 of the original volume, and the fourth option is quadrupled. That means 4 times, increases 4 times. But remember one thing, according to the Boyle's law, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure when the temperature is kept constant. That means when you double the volume, then the pressure will reduce to its half of the original volume. So here Boyle's law is being applicable. So the answer is
reduced to the half of its original value. Now the MCQs number 4 of your text on page number 14. The Avogadro's number is the number of the molecules in 1 mole of a substance, 1 kilogram of a substance, or 1 cubic meter of a gas, or 1 kilogram of hydrogen gas. So remember one thing, by the definition of Avogadro's number, Avogadro's number is the number of the molecules in a 1 mole of a substance, and its value is a constant. Its value is 6.022 into 10 raised to 23 number of the molecules per mole. So this one is a fixed number, and so that means according to your MCQs, the Avogadro's number is the number of the molecules in 1 mole of a substance. So answer is 1 mole of a substance. So this one is question number 4. Now the question number 5, MCQs number 5, the mean translational kinetic energy per molecule of an ideal gas at temperature T is. यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल है वो कितनी होती है जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी हो। तो ये 4 ऑप्शंस दिए आपको, तो याद रखिए नीचे देखें मैंने 2 फार्मूले दे दिए आपके पास। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होती है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होती है 3/2 के टी के, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होती है वो बराबर 3/2 आर टी के। सो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल पूछा है, सो 3/2 के टी, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द एमसीक्यू नंबर 6, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कितना होता है, दैट वन इज 4 ऑप्शंस आर गिवन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, that's equivalent to 37 degree Celsius, 99.6 degree Fahrenheit, that is approximately equal to 37.4 degree Celsius, 100.4, that is equal to 38 degree Celsius, 101 degree Fahrenheit, that's equal to 38.3 degree Celsius. These 4 options are given. So मैंने ये नीचे नोट पॉइंट दे दिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज typically around 98.6 degree Fahrenheit, or you may say 37 degree Celsius. पर ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो एग्जैक्टली, टिपिकली इसको हम लेते हैं, लेकिन ये इसकी रेंज थोड़ी सी चेंज भी हो सकता है। हाउ इट कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट मीन्स 37.2 डिग्री सेल्सियस पे के बीच में जो भी टेम्परेचर होते हैं उसको हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर समझते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक द टाइम ऑफ द डे, एज, एक्टिविटी एंड मेजरिंग मेथड्स। तो इसमें से थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है लेकिन उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाए। सो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दैट ऑप्शन is A. So this one is the correct answer. Question number 7, the pressure P, the density rho, and the average speed of the molecule of an ideal gas V are related by the equation. Which equation shows the relation between these 3 variables, pressure, density, and average speed? So according to the kinetic molecular theory, it's being proved that C is the correct answer. So in this equation, P is equal to 1/3 rho. Rho shows the density, mass per unit volume. Average square, ये जो बार लगा है एवरेज को शो कर रहा है, स्क्वायर एवरेज स्क्वायर स्पीड जो है वो वी स्क्वायर बार से शो की गई है। तो ये फार्मूला जो है कैलकुलेट करता है प्रेशर को। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन एयर एट एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द एवरेज स्पीड ऑफ द oxygen molecule is greater than the nitrogen molecule, or the nitrogen molecule is greater than the oxygen molecule. Option C is given. Oxygen molecule is approximately equal to the nitrogen molecule, and option D is helium atom is greater than both the oxygen and nitrogen. So remember one thing, the speed according to the kinetic molecular theory at same temperature, mean at STP means the temperature for all the gases will be the same. जब सेम टेम्परेचर होता है तो स्पीड जो है वो डिपेंड करती है मास पे। दिस वन speed is, average speed is inversely proportional to the square root of the mass. That means
जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड कम होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो 32 ग्राम पर मोल है, और नाइट्रोजन का जो है वो 28 ग्राम पर मोल है। उसका मतलब है नाइट्रोजन की स्पीड ज्यादा होती है, मीन्स ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सेकंड है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है हालांकि, क्योंकि नाइट्रोजन की जो स्पीड है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो सी दिया गया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नो, इट्स रॉन्ग आंसर। लेकिन डी ऑप्शन में दिया गया है हीलियम एटम इज ग्रेटर देन बोथ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। हालांकि ऑप्शन बी भी सही था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन सी के डी के अंदर उन्होंने 3 गैसेस का जिक्र कर दिया है, तो हीलियम का मास जो है वो 4 है, नाइट्रोजन का 28 है, और ऑक्सीजन का 32। उसका मतलब है सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड जो है वो हीलियम की होगी एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन D is a correct answer. Helium atom is greater than both oxygen and nitrogen molecules. I think you have got this answer. Now the question number 9. If the absolute temperature of gas is increased 3 times, the root mean square velocity of the molecule will be. So यहाँ कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो ज़ाहिर डिपेंड करती है मास पे और टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके साथ स्क्वायर रूट के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मूला आपके सामने ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड रेडिकल 3RT/m। इसमें वो कह रहा है अगर इस टेम्परेचर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। जो रूट मीन वेलोसिटी न्यू बनेगी उसको मैंने डैश से शो किया, टेम्परेचर को टी डैश से, तो बराबर हो जाएगा 3 अपनी जगह पे, आर और एम अपनी जगह पे रहेंगे। आर डैश की जगह पे आ गया 3T, तो रेडिकल 3T को बाहर निकाल दिया, बाकी ये जो सारा बचा है ये ऑलरेडी इस फार्मूले के मुताबिक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट मींस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल इंक्रीज रेडिकल 3 टाइम्स। ऑप्शन जो आपका है वो है रेडिकल 3 टाइम्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. Dear student, the last MCQs of chapter number 15. A gas is enclosed in an isolated container which is placed on a fast moving train uniformly. The temperature of the gas. देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मीन्स देयर इज नो change of the heat, no heat enters in the enclosed gas cylinder or not it is leaving, that's why इंक्रीज उस कह रहा है इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर पे क्या आएगा, इंक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन में जो मूव कर रही है क्या उसके मोशन की वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, डिक्रीज होगा, या रिमेन्स कांस्टेंट और फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन स्पीड एंड डायरेक्शन। लेकिन ये देखें यूनिफॉर्मली ट्रेन मूव कर रही है, पहली बात तो उसके मोशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आ सकता, और दूसरी बात आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। इन एन आइसोलेटेड कंटेनर द गैस इज नॉट एक्सचेंजिंग द हीट विद द सराउंडिंग्स, so the motion of the train does not affect as well, so the internal energy of the gas will remain same as long as there is no external force acting on the gas or its container. That's why the internal energy will remain constant, that means the temperature will also remain constant. So your answer is C. Option C is the correct answer. In this way, Alhamdulillah, we have completed all the 10 MCQs of chapter number 15. May God bless you. Thank you.